Assalamu alaikum, second year students. Welcome to lecture number 5 of your chapter homeostasis, in which we're going to be talking about excretion in some representative animals. So, talking about representative animals, let's start off with the simplest. We have Hydra, which is a cnidarian, and cnidarian we know are the organisms जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं है या डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप नहीं है. सो इट मीन्स इनके पास कुछ डिस्टिंक्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद नहीं है, ना ही कोई ऑर्गन है एक्सक्रीटरी. इंस्टेड व्हाट दे डू इज़ दे सिंपली डिफ्यूज़ देयर वेस्ट्स into the external environment using their body surface. So next we're taking a look at planaria. Planaria we know are a part of Platyhelminthes, as you learn in the chapter number 10 of your first year, which means they are flatworms. और इनके पास भी बहुत advanced excretory system नहीं है. Instead they have a very simple tubular excretory system which is called protonephridium. This is their main excretory system. It's a tubular system, which means it will be a longitudinal tube that would extend throughout their body, and it is a network of different tubes coiled together, a number of tubules joined together, and we call them protonephridium. This excretory system also has two main parts, which are flame cells and nephridiopores. So the body of planaria looks a little something like this, in which they have the extended long tubular structure, which is their excretory system on the both sides, and it has small branches. These branches have specific cells. If we zoom in on one of these cells, it would be like this. This is the main duct or the main tube, excretory tube, from which there is an extension like this and also small extensions like these. What these two extensions are, one of these is called flame cells, and the reason for that is that these parts of the tubular structure have cilia in them. Cilia are small hair-like extensions or hair-like structures that perform the function of movement. And what they're doing here is they're moving so that the material present around them, which is inside the body of planaria, will move inside this tube. So cilia की movement से जो इनके surrounding के fluid में डिफरेंट वेस्ट्स थे, डिफरेंट मेटाबोलाइट्स थे जिनको एक्सक्रीट करना है, वो इस ट्यूब के अंदर एंटर होना शुरू हो जाएंगे, एंड दे विल स्टार्ट मूविंग थ्रू दिस ट्यूब, and they will eventually enter this extension which has a small opening on one end, which we call nephridiopore. Through this opening they are going to move outside the body, since this nephridiopore is connected to the exterior of the body, which means जो body की surface है, जो outline है, ये वहाँ पर छोटे छोटे pores होते हैं जिनको हम nephridiopores कहते हैं, और ये nephridiopores जो होंगे वो चीज़ों को excrete out करने का काम कर रहे होंगे. The reason why these flame cells are called flame cells is because of the movement of these cilia. जब ये सीलिया मूव करते हैं तो ये रिजेंबल कर रहे होते हैं एक फ्लेम की मूवमेंट से, जैसे एक फ्लेम फ्लिकर करते हुए हिलता है अपनी पोजीशन से, उसी तरह से ये सीलिया मूव करते हैं, और इसी वजह से इस सेल को हम फ्लेम सेल का नाम देते हैं. So next representative animal that we're going to be taking a look at is earthworm. It's a segmented worm, which means their body is divided into segments, और इसी वजह से इनके डिफरेंट सिस्टम्स जो होते हैं वो भी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं. सेम गोज़ फॉर देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम एज वेल, विच इज़ अ ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंड वी कॉल इट मेटानेफ्रीडियम. मेटानेफ्रीडियम जो है इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम का नेम है, and it is present in the form of pairs, metanephridia, in each segment. One distinguishing part that this metanephridium has is called nephrostome, और ये एक इंटरनल ओपनिंग है. अनलाइक प्लेनेरिया जिसमें हमने कहा कि उनके पास कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं है, अर्थवर्म के पास एक इंटरनल ओपनिंग है विच इज़ कॉल्ड नेफ्रोस्टोम. और इंटरनल ओपनिंग का मतलब हुआ ये वो वाली ओपनिंग होगी जिसने कि
डिफरेंट फ्लूइड्स को या डिफरेंट वेस्टफुल मटेरियल को रिसीव करना है। सो हमने कहा अर्थवर्म की जो बॉडी है वो सेगमेंटेड है, सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। अगर हम उसमें से एक सेगमेंट को जूम इन करके देखें और देखें उसके अंदर क्या काम हो रहा है, तो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। इन दिस सेक्शन ऑफ और सेगमेंट ऑफ earthworm there is a tubular structure like this which we called metanephridium. It has two openings. The one main opening which we said is called nephrostome is located right here, and another opening would be which will be connected to the outside, which is a nephridiopore. So what's going to happen is this tubular structure is also richly supplied with blood capillaries, जिसका मतलब है इसके सराउंडिंग में blood capillaries का एक thick network होगा. So what's happening is any kind of fluid which contains waste material is going to enter into this tubular system through this pore, जिसको हमने नाम दिया नेफ्रोस्टोम का. इसके अंदर से इसने इस पूरे ट्यूबुलर सिस्टम में से मूव करके एंडिंग तक जाना है, और इस पूरे टाइम में जितने भी यूज़फुल मटेरियल्स उस फ्लूइड में होंगे वो सारे के सारे इन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, और एट द एंड जो वेस्टफुल मटेरियल सिर्फ बचेगा जिसको एक्सक्रीट करना होगा, इट विल बी मूव्ड आउट ऑफ दिस पोर विच वी सेड इज़ कॉल्ड नेफ्रिडियोपोर आउट ऑफ द बॉडी, एंड दिस इज़ हाउ earthworm carries out the function of excretion. सो आखिर में हम देख लेते हैं कि कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है. कॉकरोच के पास अपना एक सेपरेट एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, इंस्टेड दे हैव एन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर. उनके पास कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक क्लस्टर की फॉर्म में इकट्ठे हुए होते हैं, विच वी कॉल्ड मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स. और इनका नाम आपने श्योरली पहले सुना हुआ होगा, बिकॉज दीज मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स आर ऑल्सो मैंशनड वाइल स्टडिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच. और उसके पीछे रीज़न यही है कि ये मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं वो कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड होती हैं. So in this diagram of the digestive system of cockroach, you can locate the malpighian tubules right here. They are located in the region or area of hindgut, which comes after midgut, and it contains ileum, colon and rectum, and an opening called anus. So इस जगह पे malpighian tubules excretion का काम किस तरह से कर रही हैं? So malpighian tubules काम क्या कर रही हैं? They are going to receive different waste materials and metabolites which could contain salts and uric acid and water. उसको रिसीव करके इन्होंने अपनी ल्यूमिन के अंदर लेके जाना है, विच इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ट्यूब. उसके अंदर से इस सारे वेस्ट ने मूव होकर चले जाना है. हमने अभी कहा हाइंडगट में, क्योंकि ये हाइंडगट के साथ कनेक्टेड है. इन हाइंडगट के थ्रू ये वेस्ट मटेरियल मूव करेगा, एंड एट द एंड इट्स गोइंग टू रीच द रेक्टम. रेक्टम के अंदर ये वेस्ट थोड़े टाइम के लिए स्टोर हो सकता है, एंड आफ्टर विच इट इज़ गोइंग टू मूव आउटसाइड with the help of this opening called anus. So to sum it all up, today we learned about excretion in representative animals. We learned that Hydra has no excretory system. In planaria, the tubular excretory system is called protonephridia. In earthworm, the system was also tubular called metanephridia. And in cockroach, there were small tubules called malpighian tubules which were connected with the digestive system of cockroach. As always, at the end, I've added some important questions that can be asked from these topics, as well as some helpful, resourceful links which you can get any help that you need from. And I'll see you in the next lecture, inshallah. Allah Hafiz.